Good morning, students. So already we have completed 4 problems. Then let me start with 5th problem. And what is that 5th problem? Dekh lo. What is the magnitude of magnetic force? Problem number 5. What is the magnitude? What is the magnitude of magnetic force? Of magnetic force per unit length. Per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field. A uniform magnetic field of 0.15 Tesla. This is our problem. एक बार देख लो. What is the problem he has given? What is the magnitude of the magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. Right? अब solution लिखना है. Our aim is to calculate the magnetic force per unit length. So, current carrying conductor is in the region of magnetic field. We know that F equals to BIL sin theta. यहाँ पे तो लेंथ नहीं दे सो है. He is asking force per unit length. So, shall I write F by L is equals to BI sin theta? Right? What is B? Magnetic field 0.15 Tesla. 0.15 Tesla. What is current? 8 ampere. What is angle made? Sine 30 degree. Then F by L is equals to 0.15. That is nothing but 15 into 10 to the power of minus 2. 8 sine 30 is nothing but 1 by 2. Shall I make it 4? 2 ones are 2 fours are. Right? 4 into 15, that is nothing but 60. Shall I write 0.6? What is the answer? Force per unit length equals to 60 into 10 to the power of minus 2. 0.6 Newton per meter. This is your answer. एक बार पूरे glance कर लो. 2 ones are 2 fours are 15 fours are 60. चेक करो. there will be no need of the calculator. every time मैं यही बोलते रहता हूँ, मैं कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती बोले तो आपको नीट और सीटी के लिए कैलकुलेटर की कतई ज़रूरत नहीं होती. राइट? नाउ दिस इज आवर फोर्स पर यूनिट लेंथ. एक बार पूरे अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स को देख लो. सिंपल प्रॉब्लम है. यहाँ पे गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं. पूरा वर्ड ए टू जेड प्रॉब्लम के अंदर ही है. फिर और एक बार गिवन लिख के फिर लाइन क्यों बढ़ा लेते हैं. राइट? नाउ दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज 0.6 Newton per meter. Is it clear? Yes. Let me go for next problem. निकाल दो इसे. Yes.
सिक्स्थ प्रॉब्लम निकाल लेता। सो व्हाट इज दैट सिक्स्थ प्रॉब्लम? देख लो, पूरे प्रॉब्लम ईजी रहते हैं, आप अच्छी तरह से सही ढंग से अप्रोच करो बस, विथ कॉन्फिडेंट। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम बोले तो डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। राइट? नेक्स्ट वन, सिक्स्थ प्रॉब्लम। 3 centimeter wire, a 3 centimeter wire carrying a current of 10 amperes is placed inside a solenoid perpendicular to its axis, full stop. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? What is magnetic force on the wire? Now this is our problem. एक बार देख लो. What is that problem? A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Full stop. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? Right? Solution. इसका मीनिंग इतना ही है, current carrying conductor in the region of magnetic field. Here the magnetic field is provided by whom? Solenoid. हमको solenoid के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. Magnetic field दिए सो है, किससे क्रिएट करे सो है वो? From the solenoid we have created the magnetic field. In that magnetic field we have current. You place the current carrying conductor. Then what is the force experienced by it? That is the only thing. Shall I write directly formula? Direct formula based है. By using relation, we have magnetic field, that is force experienced by the current carrying conductor, BIL sin theta. Perpendicular, what is that theta? 90 degree. Here theta equals to 90 degree, F equals to, what is B? Magnetic field 0.27 Tesla. What is current? 10 amperes. What is length? 3 centimeter. Sin 90. Sin 90 is how much? 1. Shall I write? 3 7 are 21. Right? 0.81 shall I write? 0.81. This is 10 to the power of minus 1 sin 91. Right? What is that answer? देख लो कितना हो जाता है. Shall I shift here? This is 0.081 Newton. Right? Or 8.1 into 10 to the power of minus 2 Newton. Therefore, ऐसा भी लिख सकते हैं, F equals to 0.081 और दो जगह हटा दो, 8 into 8.1
8.1 into 10 to the power of minus 2 न्यूटन. दिस इज योर आंसर. अब कैसा भी लिख सकते हैं, दो जगह हटा दे और तीनों जगह हटा दे. 81 into 10. दिस इज योर आंसर. एक बार देख लो. कुछ नहीं, खाली फार्मूला बेस्ड है. लिखना, देर आर द सो मेनी लाइन्स फॉर द प्रॉब्लम बट ओनली 3 लाइन्स द सोल्यूशन. एक तरह अच्छी तरह से प्रॉब्लम्स को समझ लो. व्हाट आर द गिवन थिंग्स इन द प्रॉब्लम. देयर विल बी नो नीड ऑफ राइटिंग वंस अगेन द गिवन थिंग्स. पूरा सिंपल प्रॉब्लम है, वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो. इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द कैलकुलेटर? नो. शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन? Yes. Seventh problem जा सकते हैं? Yes. Almost all these problems are belongs to NCERT. आप टेक्स्ट बुक देख के निकाल के देखे तो भी आपको पूरे मिल जाएंगे सेंटेंस प्रॉब्लम्स. Yes. Next, 7th problem. निकाल दूँ? Yes. Seventh problem. Two long and parallel straight wires A and B. He has mentioned. It is 7th problem. Two long and parallel straight wires A and B. A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction. In the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A. Now this is our problem. The two parallel conductors separated by a certain distance and carrying the current in the same direction. When the two parallel conductors carry the current in the same direction, what is the nature of the force? The nature of the force is attractive. According to the ampere, like currents attracts and like current repels. These are the like currents. There is a force of attraction between the two parallel conductors. Our aim is to calculate the force on a 10 centimeter long section of a wire A. Solution. We know that force F equals to mu naught divided by 2 pi product of the current divided by distance into length. Length of what? Wire A. Then shall I write F equals to, is it 2 into 10 to the power of minus 7? What is I1? 8 ampere. What is I2? 5 ampere. What is length? 10 centimeter. Distance separated by a distance of 4 centimeters. Is it clear?
So these two get cancels, minus 2 get cancels, 4 ones are 4 twos are. Then 2 twos are 4, 4 fives are 20. 20 into 10 to the power of minus 7 plus 1 minus 6. Shall I write 2 into 10 to the power of minus 5 Newton? This is your answer. चेक कर लो एक बार. कहाँ है? पूरे कैंसल्स हो गए. सिंपल. प्रॉब्लम ही बड़ी है. सेंटेंस. What is the force on a 10 centimeter section wire of A? That is 2 into 10 to the power minus 5 Newton. This is our answer. Right? इधर लिख सकते हो. Therefore, F equals to 2 into 10 to the power of minus 5 Newton. What is the nature of the force between the two parallel conductors? That is attraction. Like current attracts. देख लो एक बार अच्छी तरह से. इज इट क्लियर? एक बार देख लो पूरे अच्छी तरह से. कुछ भी नहीं है वहां पे. Shall I go for next 8th problem? Yes. निकाल दो इससे. Okay. Let me come across 8th problem. पूरे प्रॉब्लम सिंपल है. आप ही देख रहे हैं. There will be no need of the calculator. आराम से 1 to 10 टेबल इज मोर देन सफिशिएंट. 10 to the पावर कन्वर्शन फैक्टर. इससे पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोल दिया था. यस. 8th problem. A closely wound solenoid. A closely wound solenoid. A closely wound solenoid. Solenoid 80 centimeter long. 80 centimeter long has 5 layers. Has 5 layers of winding. Windings of 400 turn each. The diameter of the solenoid is the diameter of solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is, if the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of magnetic field inside the solenoid. Inside the solenoid near its center. Now this is our problem. Our aim is to calculate the magnetic field at the center of the solenoid. Right? यहाँ पे diameter कुछ काम के लिए नहीं आते ही. Diameter or radius is meant for what? Toroid.
राइट। एक बार प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से ग्लांस करो, देन लेट मी कम अक्रॉस सोल्यूशन। सोल्यूशन को आ जाता मैं। So our aim is to calculate the magnetic field at the center of the solenoid. अगर एंड में रहते बोले तो the magnetic field produced at the end of the solenoid is half of the magnetic field produced at the center. बट आपको सेंटर में पूछे सो है, अगर एंड में पूछा बोले तो जो भी आंसर आता है सेंटर उसका आधा करके दे रखना आंसर, राइट। अब सेंटर में पूछे सो कोई दिक्कत नहीं है। We know that magnetic field due to solenoid B equals to mu naught Ni. Then what is here small n? Small n equals to total number of turns per unit length. What is total number of turns? खाली हम n लिखते थे, यहाँ पे number of layers है, number of turns into number of layers divided by length. This gives what? Small n. और खाली नंबर ऑफ टर्न्स रहते तो डायरेक्टली n लेते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या करे सो है 5 लेयर के फॉर्म से ऊंड करे सो है। Hence total number of turns equals to number of turns into number of layers. Then shall I write here B equals to mu naught number of turns into number of layers divided by L into current. सही है? Then substitute करो। Mu naught equals to 4 pi into 10 to the power of minus 7. What is number of turns? 400. How many layers? 5 layers. यहाँ पे है 5 layers. Then what is the current through the solenoid? 80 centimeter long. Current carried 8 ampere. What is length? कितना है लेंथ? 80 सेंटीमीटर। देख लो, म्यू नॉट इक्वल्स 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7. Number of turns 400. How many layers? 5 layers. Current through the wound, that is nothing but coil, 8 ampere. This हो यहाँ पे current carried is 8 ampere. Then 80 centimeter length. Right? So 8 ones are 8 tens are. So yeah, then 4 into pi. Shall I write here 4 into 3.14 into 5 fours are 20. That is nothing but 2000. Into 10 to the power of minus 7. ये कितना हो जाता है 10 to the power of minus 1. सही है? 4 into 3.14 12.56. Shall I write 12.56 into कितने zeros है 3 zeros. एक ऊपर लेके आओ 4 zeros. 2 into 3 0 एक ऊपर है तो 1 0 4 zeros a minus 7 plus 4 minus 3. Shall I write? Yes. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 12 10 11 carry 1 24 25.12 into 10 to the power of minus 3 टेस्ला. एक बार चेक कर लो. This is your answer. अब एक जगह हटा दे तो 2.5 1 into 10 पर -2 टेस्ला लिख सकते हैं. राइट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12.25.12 ऐसा भी लिख सकते हैं आप 25.12 into 10 to the power of -3 और जगह हटाओ 2.512 into 10 to the power of -2 टेस्ला. जो आपको कन्वीनियंट होता है वैसा लिखो. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज करे सो क्या देखो जरूरत ही नहीं पड़ती.
देख लो गौर से. Now this is important factor. Small n equals to total number of turns per unit length. Total number of turns equals to number of turns into number of layers divided by L. देख लो गौर से. इज इट क्लियर? अगर आपको क्लियर है बोले तो नेक्स्ट 9th प्रॉब्लम चाहता हूं मैं. Shall I go for 9th problem? Is it clear? Yes. सिंपल प्रॉब्लम्स है. अब अप्रोच सही ढंग से करो बस. बार बार बोलने का वही मतलब है. डोंट बी टेक एनी टेंशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स. आप थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ ले, हो गए. शैल आई गो फॉर 9th वन? यस. ये जो आपका प्रॉब्लम आंसर है. लेट मी गो फॉर 9th प्रॉब्लम. 9th प्रॉब्लम मिटा दो इससे. यस. व्हाट इज दैट 9th प्रॉब्लम? देख लो. राइट. देख लो क्या बोलता है. A square coil of side 10 centimeter. A square coil of side. A square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of carries a current of 12 ampere. Full stop. The coil is suspended. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil. Plane of the coil makes an angle of 30 degree. Makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of 0.80 Tesla. 0.80 Tesla. What is the magnitude of the torque? What is the magnitude of torque experienced by the coil? Experienced by the coil. Now this is our problem. देखो एक बार पूरी तरह से. A square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil. जब A sentence normal आता है, this is nothing but alpha is given. If it has not mentioned the normal in the sentence,
सो योर एंगल अल्फा शुड बी 90 माइनस गिवन एंगल. यहाँ पे नॉर्मल दिए सो है, डायरेक्टली अल्फा दिए सो है. नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल makes an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of 0.8 Tesla. What is the magnitude of the torque experienced by the coil? The torque on a current loop. Right? देख लो. Solution. We know that the torque on a current loop, torque tau equals to mb sin alpha. So he has given the square coil of side 10 centimeter consists of number of turns. Then what is that m? M equals to I into A. For n number of turns, NIA. NIA. So torque tau equals to NIA into B sin alpha. So square coil, what is the side A? That is area equals to side square, right? Then torque tau equals to, shall I write what is the side? 10 centimeter. So here 10 into 10 to the power of minus 2 square, area equals to 10 to the power of minus 2 meter square, minus 1 square minus 2. यहाँ पे substitute करो. Number of turns 20. What is current? 12 ampere. What is area? 10 to the power of minus 2. What is magnetic field? Point. Sine 30 degree. Right? Directly alpha दिया सो है. So 24, 240. 8 into 10 to the power of minus 1. A minus 2. 1 by 2. Right? Torque tau equals to 2 ones are 2 12s are 120 into 8 10 to the power of minus 3 960 into 10 to the power of minus 3 0.96 Newton meter. देख लो एक बार. No need of calculator. 0.96 Newton meter. ग्लांस करो अच्छी तरह से. लिखने के लिए प्रॉब्लम बड़ी है. देन सॉल्यूशन देखो. यहाँ पे सही ढंग से अप्रोच करो. 30 डिग्री नॉर्मल सेंटेंस दिया सो है. जब नॉर्मल दिया सेंटेंस में दैट इट सेल्फ इंडिकेट्स दैट इट इज नथिंग बट व्हाट अल्फा इज प्रोवाइडेड. अगर नॉर्मल सेंटेंस नहीं रहता था सो वी हैव टू बी डिडक्ट द गिवन एंगल फ्रॉम 90 डिग्री देन वी गो फॉर अल्फा. अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा हो जाता था. यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस दिया सो डायरेक्टली हैज प्रोवाइडेड दैट इज अल्फा वैल्यू. एक बार देख लो पूरा. सिंपल प्रॉब्लम्स है. इज इट क्लियर? सिंपल है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम के अंदर. टोटल कितने प्रॉब्लम्स हो गए? कल 4 हो गए थे. नाइन्थ प्रॉब्लम मीन्स टोटल वी हैव कंप्लीटेड 5 प्रॉब्लम्स टुडे. अब बचा क्या? और एक क्लास में और एक 2 क्लासेस प्रॉब्लम्स हो जाते देन वी गो फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स. पूरे प्रॉब्लम्स जो है कंप्लीट कर देंगे. Is it clear? Yes.
आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स क्लियरली. कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है वहाँ पे, नाम के वास्ते प्रॉब्लम्स है. पूरे एनसीईआरटी के एनुअल सेक्शन के लिए भी इसी तरह प्रॉब्लम पूछता आप लोगों को. ऑलमोस्ट ऑल द एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स वी आर डूइंग. सो वी हैव कंप्लीटेड टोटल 9 प्रॉब्लम्स. द फ्यू मोर प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट. अभी 2 क्लासेस में वही प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाते हैं. आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड द थिंग्स. इज इट क्लियर? यस. Let me continue in the next class, next problem session. Thank you.